द क्रेडेंशियल्स ऑफ यूके गवर्नमेंट वेबसाइट। आज की इस वीडियो में हम यूके की ऑफिशियल वेबसाइट को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप यूके में बिजनेस करना चाहते हैं या सेटल होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई मुफीद हो सकती है। हम आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट की इम्पोर्टेंस के बारे में बताएंगे कि कैसे ये इमिग्रेशन, बिजनेस मैटर और यूके रेजिडेंस के मामलात को आसान बनाती है। मज़ीद ये कि हम ये भी बताएंगे कि यूके में बिजनेस कैसे कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। First of all, I would like to introduce this topic. Basically, it's a website about the UK government that welcomes diverse services. This website contains all the services that the government offers, be it employment purpose, be it education purpose, or business purpose, or trading, or any transaction. So this covers all the aspects of UK related problems and their services. So इस website में we have different departments and different informations regarding immigration, business matters. Basically, it's a pool of contents, and I'm going to discuss the very important regarding to um, our business and our job. Every service that is related to our job and our work, I'm going to discuss it under it because it was very extensive and very exhaustive website. So I just covered the portions that would be helpful for us to further proceed with our work and job. So first of all, I would like to talk about Brexit. Brexit basically it's a law which refers to the UK's withdrawal from the European Union, because pehle UK was a part of the European Union, but after voting in June 2016, it just withdrew from the European Union. So it's a combination of Britain and its exit. So when you now, like before, when you used to, like everybody when used to do business with the UK, it was different because it was a part of the European Union, it was aligned with it, but the moment it just withdrew itself from the European Union, now the laws have changed. That's why the website has also amended different rules and procedures कि किस तरह when it's now not a part or इसने withdraw कर लिया, तो now what laws or what procedures to be followed, whether they are related to the export imports or the tariffs or the data and hiring, and everything is available on the website. First of all, I would like to talk about the importing goods into the UK. अब अगर हमें यूके से कोई चीज़ इंपोर्ट करानी है तो व्हाट वुड बी द circumstances and the rules according to the Brexit, जो कि नया लॉ है जो यूके में आया है आफ्टर यूके हैज़ withdrew itself from the European Union. जनवरी 2021 से 1 जनवरी से उन्होंने कहा है कि if you have to bring something or from the Northern Ireland, Ireland is also a part of the UK, from Great Britain या उसके बाहर से from outside the EU, you have to make declarations. So declarations are basically rules कि आप declare करते हो something, you have to make an announcement about a certain thing that you're doing it. तो वो आपको करना पड़ेगा. It's not like you दो parties के बीच में कोई चीज हो रही है and you proceed with it. You have to make declarations because now UK is not a part of European Union, and also you have to pay tariffs. Tariffs are basically the एक कह सकते हैं टैक्स होता है बड़े लेवल का बिजनेस में जो आप पे करते हैं when you're bringing goods or when you're exporting them or importing them. तो उन्होंने फिर ये भी बताया है कि if you're like bringing goods into the Northern Ireland, if it's outside the EU, you have to pay the tariffs, and if it's from the Great Britain, like inside the Britain, so tab you do not need to pay any duty or pay any taxes for that. एंड देव ऑल्सो सेट कि जो प्रिफरेंशियल रेट है ड्यूटी का या जो टैक्स का है वो किसके अंडर होगा. इट विल बी अंडर द ट्रेड एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जो कि यूके और यूरोपियन यूनियन के ऑथराइज्ड ऑफिशियल्स के दरमियान में हुआ है. और ये किसके अंडर हुआ है? इट्स अंडर द यूके ट्रेड स्कीम, बिकॉज एवरी लॉ हैज अ बिगर पार्टी और कमीशन दैट बेसिकली प्रोसीड्स इट विद, और उसको वो एक इंजन होता है उसका जिसके साथ वो आगे फर्दर जाती है. तो इस केस में वी हैव एन एग्रीमेंट विच इज अ ट्रेड एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग अस द रूल्स एंड लॉज कि किस तरह अगर ईयू के अंदर लाइक इफ सम कंट्रीज कमिंग फॉलिंग अंडर द एम्बिट ऑफ द यूरोपियन यूनियन, तो तब क्या टैरिफ्स होंगे, क्या रेट्स होंगे. अगर ब्रिटेन के अंदर से ही हो रहा है, बाहर से नहीं हो रहा, तब क्या होंगे. मे बी यू डू नॉट नीड टू पे एनी टैरिफ्स, तो वो भी होगा. और ये यूके ट्रेडर स्कीम के अंडर से हो रहा है. So this is what they're trying to say when you're importing goods into the UK. Now talking about the declarations, on declarations की बात की थी first introduction में मैंने कि आपको declarations under the new rules जो हैं वो बनाने पड़ेंगे. That is like you have to check the origin of the goods कि goods, because that is going to affect the tariff rate.
क्योंकि अगर आपको गुड्स का ओरिजिन पता होगा कि ये कहाँ से हुए हैं, अगर ये ईयू के बाहर से हो रहे हैं, डेफिनेटली टैरिफ रेट वुड बी डिफरेंट। अगर यूके ब्रिटेन के अंदर से हो रहे हैं तो दैट वुड बी डिफरेंट। तो ये डिफरेंट कोटाज होते हैं टैरिफ रेट के, जो कि तभी डिटर्मिन हो सकते हैं व्हेन वी आर श्योर व्हाट द ओरिजिन आर। दैट इज व्हाई वी मेक डिक्लेरेशंस टू नो व्हाट द ओरिजिन ऑफ द गुड्स आर, कि ताकि हम उस पे एक रेट सेट कर सकें। दैट इज व्हाई दे मेड इट इम्पोर्टेंट एंड नेसेसरी। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेंडिंग गुड्स फ्रॉम नॉर्दर्न आइलैंड और ब्रिंगिंग इट इनटू द नॉर्दर्न आइलैंड, तो इसके अंदर आई हैव लिंक्ड इट इन द ओरिजिनल समरी जो मैंने डॉक्यूमेंट बनाई थी। आई हैव लिंक्ड द वेबसाइट्स, सॉरी द लिंक्स, क्योंकि इट वाज रियली एक्सटेंसिव, बहुत ज़्यादा लंबा था। तो आई मेड अ लिंक देयर। यहाँ पे मैंने सिर्फ ये बताया कि अगर आपको यहाँ से यूके बेस्ड बिजनेस करना है, उसको आपने नॉर्दर्न आइलैंड से लेना है, तो तब क्या डिक्लेरेशंस होंगी, यू कैन चेक दैट वेबसाइट, आई हैव लिंक्ड इट देयर। अगर आपको आउट ऑफ दैट करना है तब क्या होगा, यू कैन आल्सो चेक हाउ टू मेक डिक्लेरेशंस इन दैट केस, बिकॉज इफ आई स्टार्ट डिस्कसिंग हाउ टू मेक डिक्लेरेशंस इट विल लिटिल बिट ऑफ आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि द मेन फोकस इज ऑन हाउ टू डू बिजनेस एंड every other part which is important for our job and work. Then if they're saying कि अगर आप goods move करें between the Northern Ireland and the European Union, then you do not need to make any declarations for the good. You know, there are rules, certain rules. And then moving qualifying goods between Northern Ireland and Great Britain through Ireland, then you also need to check what declarations needed to be made. Now talking about the commercial goods in your baggage, अगर आप commercial goods को baggage में, like you're traveling somewhere and you're taking the commercial goods with you, तो उस case में क्या होगा? For that it is very important to understand what commercial goods are. Basically commercial goods यही होते हैं, it's about the merchandise जो आप business के लिए use करते हैं, the goods, not your normal clothes and your normal stuff that you carry with you in your baggage, but it's a commercial good जो आप अपने business के purpose से you're carrying it with you, whether you're going to inside the Britain or outside the European Union. So उसके लिए उन्होंने कहा है कि commercial transport operator does not carry them for you, or you do not pay them to carry them for you. Like you have to take them with yourself. It's not that you need a commercial transport operator. It will not carry that for you, or it will not pay, because it's your business and your merchandise, so you have to pay for that. And if you've traveled to Great Britain, like England, Scotland, or Wales, carrying goods either in your accompanied baggage or in a small vehicle that can carry up to 9 people, and it can weigh to 3.5 tons or less. तो अगर आप कमर्शियल गुड्स जो हैं इस तरह से लेकर जा रहे हैं, तो यू नीड टू, उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है हाउ मच टन्स एंड हाउ मेनी पीपल यू कैन कैरी विद यू, और कैसे आप कहाँ कहाँ ट्रैवल कर सकते हैं विद द कमर्शियल गुड्स, और कौन कौन लेकर जा सकता है. देयर शुड बी नो कमर्शियल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर फॉर दैट, यू हैव टू कैरी देम योरसेल्फ. Then if talk about commercial goods out of Great Britain in your baggage, so पीछे में when I discussed it, it was I think inside the Northern Ireland from outside the EU. It was into the Northern Ireland. मतलब EU के बाहर से, यूरोपियन यूनियन के बाहर से नॉर्दर्न आइलैंड में कोई चीज आ रही है, तो दीज आर द लॉज दैट गोइंग टू बी फॉलोड. इफ वी टॉक अबाउट कि आप कमर्शियल गुड्स को ब्रिटेन से बाहर लेकर जा रहे हैं, लाइक इंग्लैंड से ग्रेट ब्रिटेन से बाहर लेकर जा रहे हैं, तो you need a full export declaration which was not present in the former one. आपको एक पूरी declaration चाहिए, because you're taking something out of the Britain. For that purpose you need to make a declaration जिसमें उसका origin, उसकी चीजें, उसका tariff rate and data, everything should be with you. And you have to make a simple online declaration in case, you know, online declaration always has a record rather than the physical वो जो papers होते हैं. So you need to make an online declaration as well. You can also make a full declaration which is like both of them almost, and you must also submit a export declaration before you leave the Great Britain. If your goods are, now there are conditions कि किस कंडीशन में आपको फुल डिक्लेरेशन एक्सपोर्ट करवानी, सबमिट करानी है. इफ यू हैव गुड्स which have a value more than 1500 pounds, or they weigh more than 1000 kilos, or they are restricted goods जो हैं वो I've also linked them in my document कि कौन कौन सी goods हैं, जैसे certain spices हैं जो आप नहीं लेके जा सकते यूके के अंदर, certain animal पेट्स हैं, मतलब कुछ ऐसी चीजें जो आप नहीं लेकर जा सकते, फ्लूइड्स हैं कुछ जो आप ब्रिटेन में नहीं, तो वो रिस्ट्रिक्टेड गुड्स हैं. बट इफ यू आर कैरिंग देम विद यू फॉर सम पर्पसेस, जैसे कोई मेडिकल पर्पस है, इफ यू कैरिंग फ्लूइड्स विद यू, इफ यू कैरिंग समथिंग, तो उसके लिए आपको क्या डिक्लेरेशंस जो हैं वो फुल सबमिट करनी है. एंड इफ यू आर आल्सो ट्रैवलिंग विद अल्कोहल, टोबैको और फ्यूल. सो नाउ टॉकिंग अबाउट द गेटिंग ड्यूटी एंड वीएटी refund. So duty is basically, we all know that it's the tax that we pay. तो दे आर सेइंग कि रिफंड की अगर बात की जाए, तो यू मे बी able to ask for a refund after you made your declaration. Again they have made some conditions. अगर you do not travel, some for instance, अगर आपने
declaration कर ली है, everything is done, but you're not traveling now, so you can ask for a refund. Or if your goods are lost or destroyed before they reach the UK, and you make a mistake to work out your duty. So these are certain conditions where you can easily manage them if you have an import declaration. इसलिए declaration की बार बार इन्होंने emphasize किया हुआ है, because you need that specific number. अगर आपने business import करवाना है अपना, you have to check the business कि आप जो send कर रहे हैं, the goods can export to the UK. Basically, sorry, अब जो आप बिजनेस सेंड कर रहे हैं, द बिजनेस सेंडिंग यू द गुड्स, सॉरी, जो बिजनेस आपको गुड्स सेंड कर रहा है, मे नीड, उसमें दो बातें लिखी हुई हैं कि टू मेक एन एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन इन देयर कंट्री. अगर आप समझे कुछ चीज इंपोर्ट करवा रहे हैं, इट मीन्स दैट दी सम अदर कंट्री इज एक्सपोर्टिंग दैट बिजनेस टू यू. सो जो प्रोसीजर आपने करना था टू सेंड थिंग्स आउट ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन, नाउ इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक फुल डिक्लेरेशंस व्हाइल दे सेंड यू द गुड्स. Like you're importing a business from outside. For example, आप sanitizers मंगवा रहे हैं from outside, so that country which is sending you and you're importing from them, that country needs to make a declaration and licenses or certificates to send goods to the UK. There must be a license and certificate, because now we are not sending something out, they are sending something to the UK, तो उनको license और वो चीज़ चाहिए होंगी in case if there is any infringement, so you can sue them or something like that. नाउ एक्सपोर्ट गुड्स फ्रॉम द यूके. अब आपको एक्सपोर्ट करने हैं. फर्स्टली वी टॉक्ड अबाउट इंपोर्टिंग, अब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं, तो उसमें भी डेफिनेटली देयर आर स्पेशल रूल्स एंड यू नीड टू गेट लाइसेंसेज एंड सर्टिफिकेट्स इफ यू आर एक्सपोर्टिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग. अब देखिए यहाँ पर दे हैव कैटेगराइज थिंग्स कि इन चीज़ों की दफ़ा वैसे तो बहुत ज़्यादा थे. आई हैव लिस्ट डाउन वेरी फ्यू, others are in the document that I have submitted, because it was impossible to write down every single. तो मैं एग्जांपल्स यहाँ बता देती हूँ कि ये जो गुड्स हैं, जैसे एनिमल्स और एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, बिकॉज दे आर वेरी पीपल आर कॉन्शियस अबाउट एनिमल्स एंड ऑफ कोर्स दे हैव राइट्स ऑल अराउंड द ग्लोब. तो इस वजह से उनके प्रोडक्ट्स और उनकी जो एनिमल्स हैं, बिकॉज एनिमल जाहिर सी बात है एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते. यू कैन नॉट कंट्रोल देयर एक्शंस, बट यू कैन डेफिनेटली कंट्रोल योर रिएक्शंस रिगार्डिंग देम. तो उसके लिए यू नीड लाइसेंसेस एंड सर्टिफिकेट्स. प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, ड्रग्स एंड मेडिसिन, केमिकल्स हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस अगर आप कर रहे हैं, एफ गैसेस, फ्लोरीन गैसेस हैं, radioactive substances, diamonds, artworks, antiques, all of these which are mentioned here. इस case में you need the licenses. और ये तभी, why you need the licenses, because they're unlikely, if somebody travels with it, it is unlikely somebody takes an ozone depleting substance or fluorine gases. तो अगर वो लेके जा रहा है, he needs a license certificate for that कि यार मैंने special purpose के लिए लेकर जा रहा हूँ. गेट योर बिजनेस रेडी टू एक्सपोर्ट की इसी का आगे से कंटिन्यूएशन है. उन्होंने यही बात की है कि यू नीड एन EORA नंबर जो स्टार्ट होता है विद GB. ये उन्होंने स्पेशल कोड दिए टू एक्सपोर्ट गुड्स, ठीक है. तो GB स्टैंड फॉर ग्रेट ब्रिटेन. तो ये इन्होंने कहा कि उसके लिए आपको एक स्पेशल कोड चाहिए जो स्टार्ट होता है GB से. आप उसके थ्रू एक्सपोर्ट करेंगे गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड. अगर आप गुड्स मूव करते हैं टू और फ्रॉम द नॉर्दर्न आइलैंड, तो तब आप जो है यू मे नीड वन दैट स्टार्ट्स विद XI. तो ये डिफरेंट कोड्स उन्होंने बताए हैं कि अगर आप ग्रेट ब्रिटेन से भेज रहे हैं और इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड से भेज रहे हैं, तो आप ये कोड यूज करेंगे. इफ यू सेंडिंग इट फ्रॉम नॉर्दर्न आइलैंड, यू हैव टू यूज द कोड स्टार्ट्स विद एन XI. फिर आपने चेक करना है हूएवर इज रिसीविंग द गुड, ठीक है, कि कौन रिसीव कर रहा है, और अगर जो रिसीव कर रहा है क्या वो इम्पोर्ट कर भी सकता है या नहीं कर सकता, इफ इज केपेबल और कॉम्पिटेंट इनफ. फिर द बिजनेस या पर्सन जो रिसीव कर रहा है गुड्स, ही मे नीड to make an import declaration. Like this is a mandatory step. चाहे आप import करें, export करें, you need to make declaration, whether it's online, whether it's full, whether it's partial, anything, but you need to make declaration according to the new rules, because now Great Britain is not part of the European Union. So they need to make import declarations in their country licenses and certificates to receive the goods. Talking about the services you have to provide to the EU countries, अब उनके लिए इन्होंने कहा है कि जो UK और EU के बीच में जो एक ट्रेड कोऑपरेशन हुई थी ना, एग्रीमेंट, उसने ये कंक्लूड किया दैट विद द EU इंश्योर्स दैट UK फर्म्स इन अ वैरायटी ऑफ सर्विस सेक्टर्स, और मतलब यूके के पास जो स्पेसिफिक सर्विस सेक्टर्स है ना, दैट कैन कंटिन्यू टू एक्सेस द EU मार्केट, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिनसे डील कर रहे हो दैट has an access to the other market. जाहिर सी बात एक्सेस होगी तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो कंटिन्यू हो सकेगा. जैसे उन्होंने कहा है, इंक्लूडिंग एज बिजनेस ट्रैवलर्स एंड क्रॉस border services, suppliers and investors, while being treated no less favorably than either EU businesses or competitors from third countries. मतलब they have said that although के डिपार्ट मतलब हो गए हैं दोनों कंट्रीज EU और UK,
but you have to consider, there is no way you have to consider is less फेवरेबल ईयू बिजनेसेस को, ठीक है, या फिर कोई थर्ड कंट्री जो आ रहा है, जैसे अभी हमने नॉर्दर्न आइलैंड की बात की या उन कंट्रीज की बात की, तो उस यूके ईयू ट्रेड के अंदर जो कोऑपरेशन है, इट्स बेसिकली कोऑपरेटिंग, दिस एग्रीमेंट इज कोऑपरेटिंग, यही उसके जो थे वो सारे एस्पेक्ट थे कि आपको कोऑपरेट करवाना है दोनों कंट्रीज के दरमियान. इट्स नॉट दैट दे हैव टू स्टैंड for a war against each other. It means they have to cooperate the import and export and businesses between them. And while the agreement sets out that it just sets out a clear expectation of the treatment कि किस लेवल की एक्सेस होगी टू ईच पार्टीज डोमेस्टिक मार्केट. ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक मार्केट पे इतना प्रेशर हो जाए कि वो ना इंटरनेशनल की रहे ना डोमेस्टिक की रहे. सो देर आर रूल्स हर चीज के लिए इस एग्रीमेंट के अंदर, ताकि थर्ड पार्टी भी इफेक्ट ना हो, बिकॉज द वर्स्ट दैट कैन हैपन इज कि आपकी वजह से कोई थर्ड पार्टी इफेक्ट हो रही हो. दो कंट्रीज ऑलरेडी विलिंगली हैं बीच में, बट द थर्ड पार्टी इज बीइंग इफेक्टेड. तो दिस एग्रीमेंट जस्ट सिक्योर्स द थर्ड पार्टी और जितने भी बिजनेसेस हो रहे हैं बिटवीन द यूके एंड ईयू ट्रेड, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. Talking about the trade regulations, regulations are also rules, there are also laws जो regulate करते हैं, their purpose is to regulate. तो वो कह रहे हैं कि अगर आपका यूके बिजनेस है ना, या और प्रोफेशनल प्रोवाइडिंग सर्विसेज और इन्वेस्टिंग इन द ईयू, यानी दो सूरत हाल हैं. इफ वन यू हैव अ यूके बेस्ड बिजनेस, और इफ देयर इज अ प्रोफेशनल प्रोवाइडर जो कि सर्विसेज दे रहा है या इन्वेस्ट करे इन द यूरोपियन यूनियन, आइसलैंड, ये whatever this country is, it's hard to pronounce, but I think it's okay. So then Norway or Switzerland, तो आपको you need to check the national regulations of the country. अच्छा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लॉ के कभी कभी होता है इंटरनेशनल जो ट्रीटीज होती हैं या एग्रीमेंट्स होती हैं, वी थिंक कि वो अगर कोई कंट्री उसके साथ मतलब वो जिधर जिधर इम्पोज हो रही है तो बस हमने मैंडेटरी इम्पोज करवाना है. नहीं, अगर कोई कंट्री उसमें इन्वॉल्व हो रही है लेकिन फिर भी देर आर सर्टेन रूल्स होते हैं. जैसे अगर 5 रूल्स हैं जो वो एग्रीमेंट दे रहा है, अगर कोई कंट्री 4 रूल्स के कह रहा है कि मैं ये मानूंगा लेकिन थर्ड ऑप्शनल है टू माई विल, कि वो मौका बनने पर इट्स कंडीशनल, मैं बताऊंगा कि ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, तो इट मीन्स इट्स कंडीशनल कि उस कंट्री से आपको पूछना पड़ेगा. डजंट मीन वो कंट्री ने एग्रीमेंट साइन किया तो पांचों के पांचों जबरदस्ती उस पर मैंडेटरी लगेंगे. तो इसीलिए वो यहाँ पे ट्रेड रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं कि ये जो नॉर्वे, आइलैंड, ईयू, ये जो इनकी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यू हैव टू चेक द नेशनल रेगुलेशंस एज वेल. इट डजंट मीन कि इंटरनेशनली ऑपरेट हो रहा है तो नेशनली भी बस जबरदस्ती कर देना. ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं ह्यूमन राइट्स के जिनका पाकिस्तान भी पार्ट है, बट कुछ है जो वो नहीं अप्रूव करता. मतलब इट्स सब्जेक्ट टू द डोमेस्टिक लेजिस्लेशन. जब तक पाकिस्तान में डोमेस्टिकली लेजिस्लेट नहीं होगी वो टॉपिक, वी कैन नॉट फर्दर प्रोसीड विद इट इंटरनेशनली. तो यहाँ पर भी वही बात हुई है. देन इफ talk about establishing and structuring the business. Establishing and structuring your business, this is important regarding our work as well कि हम business कैसे यूके में establish कर सकते हैं, उसको structure कैसे कर सकते हैं. Establishing is one thing but structuring is more important than that. वो कह रहे हैं if you have a UK business तो obviously you might face some restrictions कि उसको मैनेज करने में, कंपनी डायरेक्ट करने में, उसको रजिस्टर कराने में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं. तो किन चीज़ों के लिए वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड व्हाइल वी एस्टैब्लिश आवर बिजनेस. The first thing is that additional requirements on the nationality or residency of senior managers or directors. They can ask for additional requirement. It's not the first requirement, but it could be the additional requirement के बाद से nationality या रेजिडेंसी मांग सकते हैं. बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं जो रेजिडेंट नहीं होते बट दे वांट टू सेट अप बिजनेस इन यूके. तो उन्होंने कहा है कि additional requirements हो सकती हैं on the nationality. So you have to be very particular about your nationality. वो मांग सकते हैं of your senior managers of your work या आपकी कंपनी के. Then limits on the amount of equity that can be held by non-nationals. Okay, now equity is a whole subject के rule of equity क्या होता है, बराबरी and all that, जो बाहर countries में बहुत exercise होता है. If you're a non-national तो there might be some situation कि वो आपसे नॉन नेशनल होने पर दे कैन डिमांड योर इक्विटी के प्रिंसिपल्स अप्लाई कर सकते हैं आपके ऊपर, या वो लिमिट भी कर सकते हैं इक्विटी को बिकॉज यू आर नॉन नेशनल. बिकॉज नेशनल और नॉन नेशनल तो बराबर ना हुए तो दे कैन ऑल्सो लिमिट द अमाउंट ऑफ इक्विटी दैट कैन बी हेल्ड बाय नॉन नेशनल. उसके बाद इफ हम यूके कंपनीज की बात करें तो, और उनके यूके कंपनीज एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स. लिमिटेड लाइबिलिटी बेसिकली होती है कि जब आप पार्टनरशिप करते हो तो दो लोग जब पार्टनरशिप कर रहे हैं तो दे एग्री अपॉन अ फैक्ट कि जी अगर लाइबिलिटी किसी पर आएगी तो इस वाले पार्टनर पर लिमिटेड होगी, इस वाले पार्टनर पर फुल होगी. इफ आई से कि मैं मिस्रम के साथ कोई बिजनेस कर रही हूँ तो मिस्रम इस बिजनेस में आप आ जाए, डोंट बी अफ्रेड. आपके ऊपर अगर कोई मसला होता है तो लिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी, मैं फुल लाइबिलिटी
अपने ऊपर ले लूंगी, तो दैट इज द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। जो यूके कंपनीज और वो इनकी बात करें तो इस केस में that have their central administration or principal place of business in certain EU member states, and they may no longer have the limited liability recognized. सेक्टर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ये होता है कि हर सेक्टर की स्पेसिफिकली इन्फॉर्मेशन, अगर आप यूके के सिटीजन हैं एंड यू हैव क्वेश्चंस अबाउट योर लीगल पोजीशन इन एनी सेक्टर, तो आपको प्रोफेशनल एडवाइस की जरूरत है, आप वो ले सकते हैं। एंड यू कैन आल्सो कांटेक्ट द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री जो आप रहते हैं, बिकॉज ब्रिटेन एक छोटा तो नहीं है, उसमें बहुत सारे और स्टेट्स भी हैं, तो आप उनसे पता कर सकते हैं, अपने एडवाइस दे सकते हैं कि आप किसके सिटीजन लगते हैं किसके नहीं लगते, बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्कॉटलैंड और न्यूजीलैंड और ये भी हैं जिन पर अभी भी मसले चल रहे हैं अबाउट कि वो ब्रिटेन का पार्ट है या नहीं है। तो उस केस में यू कैन also call the company, जो कंपनी जिस जगह पे, you can ask about professional advice for your nationality. Auditors की बात की जाए तो वो restructure कर सकते, you may need to restructure the ownership and management of your audit firm। अगर वो यूरोपियन यूनियन, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और इन कंट्रीज के अंदर बेस्ड है तो यू कैन रीस्ट्रक्चर योर ऑडिट फर्म। बिजनेस ट्रैवल एंड एंट्री रिक्वायरमेंट, यूके अगर नॉर्मल ट्रैवल करना है तो पासपोर्ट, इंश्योरेंस चाहिए आपको, हेल्थ केयर, ड्राइविंग डॉक्यूमेंट्स, और अगर आप कोई पेट लेकर जा रहे हैं तो उसके वेट से 1 महीना पहले उसकी हेल्थ और ये वो चीज़ें। बट इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फॉर बिजनेस तो उसके लिए फॉर एग्जाम्पल इफ यू गोइंग टू मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंसेज तो यू हैव टू गिव ऑल द डिस्क्रिप्शन कि कहाँ जा रहे हैं, किस मीटिंग, किस कॉन्फ्रेंस, उसका इन्विटेशन लेटर और एनीथिंग लाइक दैट, तो उसके लिए यू हैव टू प्रोवाइड दैट। नाउ पासपोर्ट्स चेक इफ यू नीड टू रीन्यू। अच्छा, पासपोर्ट्स के ऊपर है कि यू मे नीड टू रीन्यू योर ब्रिटिश पासपोर्ट। अगर आप यूरोपियन यूनियन ट्रैवल कर रहे हैं तो यू हैव टू डू इट अर्लियर, और ये जो आगे कंट्रीज दिखे हुए हैं, नॉर्वे, आइलैंड, स्विट्जरलैंड, यहाँ पर, और ऑन द डे ऑफ ट्रैवलिंग यू विल नीड योर पासपोर्ट जो लाइक इट मस्ट बी 6 मंथ्स उसके रहते हों, बी लेस देन 10 years old, ठीक है, इवन इफ इट हैज 6 months और मोर लेफ्ट। और ये जो रूल्स हैं दे डू नॉट अप्लाई टू ट्रैवल टू आयरलैंड, ठीक है, ये सिर्फ उन कंट्रीज के लिए जो मैंने ऊपर मेंशन किए हैं। यू कैन कंटिन्यू टू यूज योर पासपोर्ट एज लॉन्ग एज इट्स वैलिड फॉर द लेंथ ऑफ योर स्टे। नाउ डिपार्टमेंट्स एंड पॉलिसी, डिपार्टमेंट्स जो है यूएस यूके के अंदर, उसमें प्राइम मिनिस्टर का डिपार्टमेंट है जो कि लीडर होता है गवर्नमेंट का, और ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द पॉलिसी एंड डिसीजंस, ही इज बेसिकली द एग्जीक्यूटिव। फिर कैबिनेट की बात की जाए, उसमें कैबिनेट होते हैं विच इज मेड ऑफ द सीनियर मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट, और हर वीक जो है पार्लियामेंट और मेंबर्स ऑफ द जो कैबिनेट हैं, जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स आ जाते हैं, दे मीट एंड दे डिस्कस द इंपॉर्टेंट इश्यूज ऑफ द गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज बनाई गई हैं, उन पे कैसे उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। देन मिनिस्टर्स दे आर बेसिकली चोजन बाय द प्राइम मिनिस्टर्स फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ऑल द एक्शंस एंड सक्सेसेस एंड फेलियर्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स। बेसिकली दे आर कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन द कैबिनेट द प्राइम मिनिस्टर्स, वो पूरे डिपार्टमेंट्स के एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन वी हैव एग्जीक्यूटिव एजेंसीज यूके डिपार्टमेंट्स के अंदर, बिकॉज दीज आर द डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, और ये प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज रादर देन द डिसाइड पॉलिसी, क्योंकि वो जो होती है ना, दैट इज डन बाय द डिपार्टमेंट दैट ओवरसीज द एजेंसी। एंड फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि एन एग्जाम्पल इज द ड्राइवर एंड व्हीकल लाइसेंसिंग एजेंसी, जो कि ओवरसीन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब वो कह रहे हैं कि जो बहुत स्पेसिफिक है ना, जैसे ड्राइविंग की बात की जाए तो उसके लिए खास इदारा बना हुआ है डिपार्टमेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, तो उनको एग्जीक्यूटिव एजेंसीज नहीं देखेंगी, उनके लिए खास इदारा है। उसके अलावा जितने भी पॉलिसी, जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, उनको वो जो है देखिए, बेसिकली एग्जीक्यूटिव का काम ही होता है एग्जीक्यूट करवाना चीजें। तो इफ समथिंग डिपार्टमेंट इज स्पेसिफिक एरिया फॉर इट, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, तो इट विल नॉट एंगेज विद दैट। सिविल सर्विस आ जाती है हमारे पास, जो कि सारा एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क करती है, बेसिकली वो कोऑर्डिनेट करती है और मैनेज, उसको कोऑर्डिनेट और मैनेज करता है प्राइम मिनिस्टर, और वो सिविल सर्विस अपनी प्रोवाइड करती है। और उसमें वो कह रहे हैं कि अराउंड हाफ ऑफ ऑल द सिविल सर्वेंट्स प्रोवाइड सर्विसेज डायरेक्ट टू द पब्लिक। बेसिकली वो होते ही सिविल सर्वेंट्स हैं, तो सिविलियंस को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें पेइंग बेनिफिट्स एंड पेंशंस, एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज को रन करना, स्टाफिंग प्रिजन्स एंड इशूइंग ड्राइविंग लाइसेंसेज, ये सब सिविल सर्विस का काम होता है यूके के अंदर। फिर सर्विसेज एंड इन्फॉर्मेशन में हमारे पास वीजा और इमिग्रेशन आ जाती है। इफ यू आर चूजिंग अ वीजा तो देयर डिफरेंट वीजा डिपेंडिंग आप कहाँ से आए हैं, वेयर यू कम फ्रॉम, वेयर यू वांट टू कम टू द यूके, सॉरी व्हाई यू वांट टू कम टू द यूके एंड हाउ लॉन्ग यू वांट टू स्टे फॉर, and your personal circumstances and skills. This is very important just to
एस्टैब्लिश टाइज कि अगर आप यूके जा रहे हैं, इफ यू गोइंग परमानेंटली, तो उसके लिए डिफरेंट स्टेप है। अगर आप सिर्फ ऐसे ही जा रहे हैं तो दे मेक श्योर दैट यू कम बैक टू योर कंट्री फॉर दैट पर्पसेस। दे नीड टू यू के दे नीड टू नो कि आप क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, और फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट एंड ऑल कि आपके पीछे आपके पास कितने एसेट्स हैं दैट वुड डेफिनेटली अट्रैक्ट यू टू कम बैक टू योर कंट्री। जाहिर सी बात है, एक इंसान है, उसको पैसे नहीं, कुछ भी नहीं है, और वो मैनेज करके यूके जा रहा है, तो देयर इज द रिस्क कि वो यूके में इलीगली सेटल हो जाएगा, वहीं रह जाएगा और वापस नहीं आएगा। सो यू नीड टू एस्टैब्लिश द टाइज विद योर कंट्री कि आप वापस आएंगे। बिफोर यू अप्लाई यू मस्ट चेक इफ यू नीड अ वीजा एंड व्हाट टाइप यू नीड। बहुत सारे वीजा की टाइप्स होती हैं, जैसे यूएस एम्बेसी में भी इफ यू गो तो बहुत B1 और B2 और ये सब वीजा होते हैं, ट्रैवल वीजा या स्टडी वीजा, और ये तो आपको बताना है कि कौन सी टाइप यू नीड। डिपेंडिंग ऑन योर नेशनैलिटी यू माइट नॉट नीड अ वीजा टू विजिट और ट्रांजिट थ्रू द यूके। तो जो आपकी एप्लीकेशन है मस्ट बी अप्रूव्ड बिफोर योर ट्रैवल। अगर वीजा नहीं भी है, इफ यूर फ्रॉम लाइक ब्रिटेन के अंदर से ही है बट यूके में नहीं है, तो तब भी अक्सर ऐसा होता है कि इफ यू आर मूविंग फ्रॉम स्कॉटलैंड टू यूके तो माइट बी पॉसिबल यू डोंट नीड अ वीजा बट यू नीड एन अप्रूवल एप्लीकेशन। हम तो पाकिस्तान से जाने की बात कर रहे हैं ना, बट देर आल्सो पीपल हु मूव फ्रॉम स्कॉटलैंड टू यूके, तो वो एक ही ब्रिटेन के अंदर आता है। तो इन दैट केस इफ यू माइट नॉट नीड अ वीजा यू नीड एन एप्लीकेशन दैट इज अप्रूव्ड। उसके बाद यहाँ पर आई हैव हाईलाइटेड इट रेड में बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू डू नॉट नीड अ वीजा इफ यू आर फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आयरलैंड और इस कंट्री से, एंड यू केम इन द टू द यूके बाय 31 दिसंबर 2020। ये उन्होंने बात कही थी बिकॉज 2021 से जनवरी से तो न्यू रूल्स अप्लाई हो गए, तो उन्होंने कहा अगर आप यूयू से इन कंट्री से तो आपको वीजा की जरूरत ही नहीं है यूके में जाने के लिए। If you started living in the UK by that date, you can apply to the EU settlement scheme to continue to work, live or study in the UK. You do not need to apply for a visa if you're an Irish citizen. Irish हैं तब भी नहीं कर सकते वीजा के लिए अप्लाई। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो उन्होंने बताई हुई कि कौन कौन है जिनको वीजा की जरूरत नहीं है यूके में जाने के लिए। देन इफ यू वांट टू विजिट द यूके, बस ऐसे ही विजिट करने जाना है, तो यू हैव टू अप्लाई फॉर अ स्टैंडर्ड विजिटर वीजा जो कि 6 मंथ्स के लिए होता है। फॉर एग्जांपल इफ यू गोइंग फॉर हॉलीडे टू सी योर फैमिली एंड फ्रेंड्स और बिजनेस ट्रिप, और यू गोइंग फॉर अ शॉर्ट कोर्स जो कि 2-3 महीने का कोर्स होता है आप करने जा रहे हैं। यू मस्ट ऑल्सो अप्लाई फॉर अ मैरिज विजिटर वीजा अगर आप अपने स्पाउस को देखने जा रहे हैं, और इफ यू हैव अ पर्सन देयर हु लिव्स, आपका स्पाउस है, तो यू कैन अप्लाई फॉर मैरिज विजिटर वीजा। एंड यू इफ यू हैव अ विजिटर वीजा यू कैन नॉट टेक अ जॉब इन द यूके। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप विजिटर वीजा पे जाकर वहां पर पार्ट टाइम और फुल टाइम जॉब्स नहीं कर सकते बिकॉज यूर अ विजिटर। यू शुड हैव इनफ एसेट्स टू गो देयर एंड एंजॉय योर ट्रैवल। देन इफ यू ट्रैवल थ्रू द यूके, यूके से कहीं जा रहे हैं, तो स्टैंडर्ड वीजा आपको चाहिए, वही 6 मंथ्स वाला, सब वही चीजें हैं। शॉर्ट टर्म स्टडी वीजा लेट्स यू कम टू द यूके टू स्टडी एन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स दैट इज ओवर 6 मंथ्स। वो आपको देते ही 6 to 11 मंथ्स का वीजा जिसमें आप अपने शॉर्ट कोर्सेज कंप्लीट कर लें। स्टूडेंट वीजा वीजा जो है वो यूजुअली लॉन्गर कोर्स के लिए होता है बिकॉज उसमें हमें ईयर्स चाहिए होते हैं, जैसे बैचलर्स डिग्री या वो। तो यू मस्ट बी स्पॉन्सर्ड बाय लाइसेंस्ड कॉलेज। आपको दिखाना होता है कि मुझे कॉलेज की तरफ से अप्रूवल लेटर आ गया, नाउ देयर दे हैव अ सीट फॉर मी देयर। तो वो सबमिट कराना इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू गोइंग टू स्टडी देयर, और वो थोड़ा लॉन्गर वीजा होता है। इट्स यूजुअली फॉर लाइक 2 to 3 years के लिए लगता है वो आपका वीजा, or according to your university requirement. A child student visa is for 4 to 17 years old who want to study at an independent school. स्कूल के लिए अगर बात कीजिए तो बच्चे का 4 से 17 साल का होना जरूरी है। If you're 16 or over you can do some work on this visa। अच्छा, वो वीजा भी आपको वर्क भी करने देते हैं if you're 16। If you want to work or invest in the UK, so you can work in the UK on a short or long term basis with a work visa। फिर आपको वर्क वीजा की जरूरत है, ठीक है। वर्क वीजा भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, दैट्स अकॉर्डिंग टू व्हाट वर्क यू आर गोइंग टू डू। इफ यू वांट टू जॉइन फैमिली इन द यूके, आप अब इधर रहते हैं, आपकी पूरी फैमिली यूके में रहती है, यू वांट टू गो देयर, अगर आप कोई स्पाउस वहां पे रहता है या फैमिली मेंबर जो ब्रिटिश सिटीजनशिप है उसके पास या सेटलमेंट इन द यूके, तो आप फैमिली वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं टू जॉइन देम। तो उनको शो करना होगा दैट दे सपोर्ट यू फाइनेंशियली, वो वहाँ के सिटीजन हैं, दे कैन सपोर्ट यू। You may be able to apply for indefinite leave to remain after a set amount of time। एंड इफ योर फैमिली मेंबर अगर यूरोपियन यूनियन से हैं या इन कंट्रीज के अंदर से हैं, तो यू कैन अप्लाई फॉर अ फ्री फैमिली परमिट इफ यू हैव अ क्लोज फैमिली मेंबर। लेकिन 31 दिसंबर 2020 की ये बात की गई है, 1 जनवरी से डिफरेंट हो गए हैं। फैमिली रीयूनियन वीजाज भी होते हैं रेफ्यूजीज के लिए। If you were separated from your partner, for example, या आपके child से, और they were forced, they were taken from you forcefully, या उनको force किया गया था to leave the country, तो आप apply कर सकते हैं उनको rejoin करने के लिए। To apply, you must have been given asylum for 5 years। asylum होता है ना, किसी दूसरे country में आप जाकर पनाह ले लेते हैं if there is, if your country is not safe for you।
ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन और ये सब चीजें। अगर आप ब्रिटिश सिटीजनशिप नहीं है आपकी और आपको फोर्सफुली अलग कर दिया गया है फ्रॉम योर पेरेंट और योर चाइल्ड, तो आप फैमिली रीयूनियन वीजा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर कॉमनवेल्थ, लाइक कॉमनवेल्थ सिटीजन के लिए भी है ये। आप अप्लाई कर सकते हैं एंसेस्ट्री वीजा के लिए टू वर्क इन द यूके। अगर जैसे आपका कोई ग्रैंड पेरेंट था या कोई इस तरह का बंदा जो ब्रिटिश था, उसमें रहता था, यू कैन अप्लाई फॉर एंसेस्ट्री वीजा। एंसेस्ट्री बेसिकली एंसेस्टर से निकला ना, आपके बाप दादा वहां रहते थे, देवर सिटीजन। फिर बाबा वाली आपकी जो ओरिजिनल पेरेंट्स वाली जो एक लाइन है वो कट गई है, बट यू कैन अप्लाई एंसेस्ट्री वीजा कि मेरे दादा वहां रहते थे, तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप मीट कर सकते हैं इन द कॉमनवेल्थ सिटीजन में। रिटर्निंग रेजिडेंट भी होते हैं, इफ यू हैड इंडेफिनेट लीव टू रिमेन और आपने यूके लीव कर दिया फॉर मोर देन 2 years, तो आप री अप्लाई कर सकते हैं। लाइक आप वहीं रह रहे थे, अभी आपका टाइम पीरियड रहता था लेकिन आप वापस आ गए, नाउ इट हैज बीन एक्सपायर्ड, सो नो यू कैन री अप्लाई फॉर द रिटर्निंग रेजिडेंट वीजा। फिर इसके अलावा अदर वीजाज भी होते हैं, इट इज बेस्ड ऑन योर सर्कमस्टांसेस। ओके, सो आई थिंक थैंक यू, दिस वाज ऑल मच। हमने इस वीडियो में इंतहाई अहम मालूमात शेयर की हैं। इसके अलावा हम बिजनेस कंसल्टेंसी और वर्चुअल सर्विसेज भी ऑफर करते हैं। हम 8 मुल्कों में काम करते हैं और बिजनेस की बुनियाद रखने से लेकर लीड जनरेट करने तक के सफ़र में आपके साथ साथ रहते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.pefconsulting.com या व्हाट्सएप कर सकते हैं 009715654999494 या ईमेल कर सकते हैं info@pefconsulting.com। हमारी टीम जल्द ही आपसे राब्ता करेगी।